Woman phoning a friend to get information about a job agency. First, you have some time to look at questions 1 to 5. अच्छा, अब देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा हूँ कि किस तरह से आप सबसे पहले अपने आंसर को रीड करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपके पास 30 सेकेंड्स होते हैं, यू हार्डली हैव 30 सेकेंड्स, और उसी के अंदर आपको फैसला करना होता है कि आपका जवाब क्या हो सकता है। जैसे आपने 1 को देखा, बैकी, अब आपको पता है इसका पूरा नाम आपको लिखना है, तो वो जब भी नाम आता है आपके पास तो उसके लेटर्स आपको बताते हैं। आपका पेपर रेडी है, पेंसिल रेडी, ठीक है। फिर बेस्ट टू कॉल हर इन द, गैस करो यहां पर क्या क्या आ सकता है, गैस करो। इन द चैट पढ़ रहा हूं मैं आप लोगों की। इन द क्या आ सकता है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, और वो तीनों बोल सकता है। मॉर्निंग भी बोलेगा, इवनिंग भी बोलेगा, आफ्टरनून भी बोलेगा। तुम्हें होशियार होना है, ठीक है। मस्ट हैव गुड डैश स्किल्स। अब देखो कौन सी जॉब है, क्लरिकल एंड एडमिन रोल्स है, तो कौन से स्किल्स होने चाहिए। अगर आप एडमिन रोल्स में होते हैं, एडमिन पर्सन है आप, तो मस्ट हैव कंप्यूटर स्किल्स, आईटी स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। और कौन से स्किल्स होते हैं, स्पीकिंग स्किल्स, ठीक है। जॉब्स आर यूजुअली फॉर एटलीस्ट वन क्या हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है। पे इज यूजुअली फॉर 5 डैश पर आवर, 5 पाउंड पर आवर। अब यहाँ पर 5 कितने, कोई अमाउंट डॉलर लिखना होगा आपको, पाउंड्स में लिखना होगा, 10 पाउंड्स, 20 पाउंड्स। वेयर आर डैश टू द इंटरव्यू, क्या पहने भाई, लहंगा पहने, शरारा पहने, गरारा पहने। मस्ट ब्रिंग योर डैश टू द इंटरव्यू, मस्ट ब्रिंग योर फोटो, योर पासपोर्ट, योर डॉक्यूमेंट्स, क्या लेकर आए। दे विल आस्क क्वेश्चन अबाउट ईच एप्लीकेंट्स, वो एप्लीकेंट के क्या पूछेंगे एप्लीकेंट से। द डैश यू रिसीव एट द इंटरव्यू विल बेनिफिट यू, will get access to vacancies are not advertised, less dash is involved in applying for the job। चलो, less what, साथ साथ सुनते हैं और शुरू करते हैं। Job agency you mentioned. Is now a good time? Hi, Amber. Yes, fine. The agency I was talking about is called Bankside. They're based in Docklands. I can tell you the address now, 497 East Side. Okay, thanks. So is there anyone in particular I should speak to there? The agent I always deal with is called Becky Jameson. Let me write that down. Becky Jameson. Jamieson. Do you have her direct line? Yes, it's in my contacts somewhere. Right, here we are. 07866 510 333. I wouldn't call her until the afternoon if I were you. She's always really busy in the morning trying to fill last-minute vacancies. She's really helpful and friendly, so I'm sure it would be worth getting in touch with her for an informal chat. Yes. लिख लिए दोनों जवाब। अगर जवाब लिख लिया तो टिक लगा दिया करें। अगर आपको दोबारा सुनना हो तो आपके पास एक एरोज होते हैं बैकवर्ड, आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान था ये। It's mainly clerical and admin jobs they deal with, isn't it? That's right. I know you're hoping to find a full-time job in the media eventually, but Becky mostly recruits temporary staff for the finance sector, which will look good on your CV and generally pays better too. Yeah, I'm just a bit worried because I don't have much office experience. I wouldn't worry.
They'll probably start you as a receptionist or something like that. So what's important for that kind of job isn't so much having business skills or knowing lots of different computer systems. It's communication that really matters. So you'd be fine there. And you'll pick up office skills really quickly on the job. It's not that complicated. Okay, good. अच्छा देखो इसने बदतमीजी क्या की। अगर आप गौर से सुन रहे थे तो इसने बिजनेस स्किल्स भी बोला, इसने ऑफिस स्किल्स भी बोला, इसने कम्युनिकेशन स्किल्स भी बोला और एक स्किल इसने और भी बोला। ये बदतमीजी होती है। अगर आपने गौर से सुना हो तो 2 में उसने मॉर्निंग भी बोला, इन द मॉर्निंग, फिर उसने आफ्टरनून भी बोला। और अगर आप दोबारा सुने मेरी खातिर तो वहां पर वो एक सेंटेंस यूज करता है, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब देखो तुम्हें अगर कंडीशनल्स की नॉलेज अच्छी है तो फौरन उसकी बात को समझ जाओगे। जब भी मैं कह रहा हूं कंडीशनल्स पढ़ो, इफ आई वर यू आई वुडंट कॉल हर इन द मॉर्निंग, तो उसने ऐसा कहा। 510333. सुनना, I wouldn't call her until the afternoon if I were you. She's always really busy in the morning trying to fill last minute vacancies. She's really helped. आप बताइए आपने मॉर्निंग लिखा या आफ्टरनून लिखा? दोबारा सुन लीजिएगा। My contacts somewhere. Right, here we are. Oh, busy in the morning trying to fill last minute. 6510333. I wouldn't call her until the afternoon if I were you. She's always really busy in the morning trying to fill last minute vacancies. She's really helpful and friendly, so I'm sure it would be worth getting in touch with her for an informal chat. और वो कहता है I wouldn't call her until afternoon, मतलब आफ्टरनून तक मैं उसे कॉल नहीं करता, आफ्टरनून में कर ले उसका मतलब। फिर उसने बाद अब स्किल्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो देखें स्किल्स, उसने कितने सारे स्किल्स बोले। Because I don't have much office experience. I wouldn't worry. They'll probably start you as a receptionist or something like that. So what's important for that kind of job isn't so much having business skills or knowing lots of different computer systems. अब देखें इसने बिजनेस स्किल्स बोला, कंप्यूटर सिस्टम। अब It's communication that really matters. इट्स कम्युनिकेशन दैट रियली मैटर्स। इसने मस्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इट्स रियली इम्पोर्टेंट, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। कैसे बोला उसने? दैट्स really She was a receptionist or something like that. So what's important for that kind of job isn't so much having business skills or knowing lots of different computer systems. It's communication that really matters. So you'd be fine there. And you'll pick up office skills really quickly on the job. It's not that. अब आगे चल के उसने ऑफिस स्किल्स भी बोल दिया। तो ये चीज आपको पार्ट 1 में कंफ्यूज करती है कि वो बहुत मल्टीपल चीजें बोल रहा होता है। होता आसान है लेकिन मल्टीपल। अब देखो एटलीस्ट 1, अब सुनना। Complicated. Okay, good. So how long do people generally need temporary staff for? It would be great if I could get something lasting at least a month. अब देखिए इसने बोला एटलीस्ट अ मंथ, ये लड़की ने बोला। That shouldn't be too difficult. But you're more likely to be offered something for a week at first. उसने पहले कहा फॉर अ वीक एट फर्स्ट। Jobs are usually for at least 1 week. Which might get extended. It's unusual to be sent somewhere for just a day. Right. I've heard the pay isn't too bad. Better than working in a shop or a restaurant. Oh yes, definitely. The hourly rate is about £10, 11 if you're lucky. That's pretty good. I was only expecting to get £8 or £9 an hour. अब आप देखें मेरी बात को नोट करें, इसने 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया, 11 भी आ गया। ये वो पॉइंट्स है जो स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ना, कि उसने कहा यूजुअली हम 10 होता है, इफ यू आर लकी यू विल गेट 11। तो उसने कहा मुझे लग रहा था कि मुझे शायद 8 या 9 मिलेंगे, लेकिन आप लोग को 10 दे रहे हैं। समझ रहे बात? So these are the things which will always puzzle you. So you always have to listen very carefully. क्योंकि वो एक वर्ड जवाब नहीं बोलता, वो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, फिर आप पजल हो जाएंगे। अब क्या पहनना है देखिए, 4 चीजें बता देगा पहनने के लिए।
Before you hear the Do you want me to tell you anything about the registration process? Yes, please. I know you have to have an interview. The interview usually takes about an hour, and you should arrange that about a week in advance. I suppose I should dress smartly if it's for office work. I can probably borrow a suit from Mum. Good idea. अब देखिए ये जब इस तरह से बात करते हैं ना, गुड आइडिया, दैट्स ग्रेट, दैट्स वाइल्ड, दैट्स वंडरफुल, तो दैट्स वही आपका जवाब है। वो दोबारा उस वर्ड को कभी रिपीट नहीं करते, उसने कहा दैट्स अ गुड आइडिया। तो उसने क्यों कहा गुड आइडिया? वेयर अ सूट टू द इंटरव्यू। It's better to look too smart than too casual. Will I need to bring copies of my exam certificates or anything like that? No, they don't need to see those, I don't think. What about my passport? Oh yes, they will ask to see that. अब आपने देखा उसने यस, श्योर, सर्टेनली, उसने सवाल पूछा पासपोर्ट, ब्रिंग योर पासपोर्ट, ठीक है? Okay. I wouldn't get stressed about the interview though. It's just a chance for them to build a relationship with you, so they can try and match you to a job which you'll like. So there are questions about personality that they always ask candidates. They will ask questions about each applicant's personality. Basic ones. And they probably won't ask anything too difficult, like what your plans are for the future. Hope not. Anyway, there are lots of benefits to using an agency. For example, the interview will be useful because they'll give you feedback on your performance, so you can... The dash you receive. क्या मिल रहा है आपको? The dash you receive. क्या सुनने में आया? क्या मिल रहा है आपको? The dash you receive. Fits to using an agency. For example, the interview will be useful because they'll give you feedback on your performance, so you can improve next time. Feedback. The feedback you receive at the interview. Up less dash is involved. And they'll have access to jobs which aren't advertised. Exactly. Most temporary jobs aren't advertised. And I expect finding a temporary job this way takes a lot less time. It's much easier than ringing up individual companies. बहुत आसानी से मिल गया आपको। लेस के बाद उसी ने फॉरेन वर्ड भी बोल दिया, लेस, 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 less time. Less time is involved in applying for jobs. ठीक है, आइए अब आप लोग ट्राई करें ताकि मुझे आप लोगों के लेवल का अंदाजा हो। बिल्कुल देखिए आपके सामने वैसे ही एक पैसेज आया है। डैश, टाइप ऑफ इवेंट का नाम बताना है, डिटेल्स आपको बतानी है, कंपनी का नाम बताना है, हैव अ गुड डैश, शो इज कॉल्ड, शो का नाम बताना है, मेकिंग डैश फूड, मेकिंग डैश क्या बना रहे, मेकिंग टॉयज फ्रॉम डैश, स्विमिंग इन द डैश, और उसके बाद एक्सपर्ट्स ऑन और सी द फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर डैश फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, चले शुरू करें। स्टार्ट। आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, आप इस पे 2 उंगलियां रखें और इसको बड़ा कर लें, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। Test 2. This is the IELTS list. Good morning. You're through to the Tourist Information Office. Tim speaking. How can I help you? Oh, hello. Could you give me some information about next month's festival, please? My family and I will be staying in the town that week. Of course. Well, it starts with a concert on the afternoon of the 17th. Oh, I heard about that. The orchestra and singers come from the USA, don't they? They're from Canada. They're very popular over there. They're going to perform a number of well-known pieces that will appeal to children as well as adults. That sounds good.
My whole family are interested in music. The next day, the 18th, there's a performance by a ballet company called Eustatis. Sorry? The name is spelled Eustatis. They appeared in last year's festival and went down very well. Again, their program is designed for all ages. Good. I expect we'll go to that. I hope there's going to be a play during the festival. A comedy, ideally. You're in luck. On the 19th and 20th, a local amateur group are performing one written by a member of the group. It's called Jemima. That'll be on in the town hall. They've already performed it 2 or 3 times. I haven't seen it myself, but the review in the local paper was very good. And is it suitable for children? Yes, in fact, it's aimed more at children than at adults. So both performances are in the afternoon. And what about dance? Will there be any performances? Yes, also on the 20th, but in the evening. A professional company is putting on a show of modern pieces with electronic music by young composers. Uh-huh. The show is about how people communicate, or fail to communicate with each other. So it's got the rather strange name, chat. I suppose that's because that's something we do both face-to-face and online. That's right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. Now, there are also some workshops and other activities. They'll all take place at least once every day. So everyone who wants to take part will have a chance. Good. We're particularly interested in cookery. You don't happen to have a cookery workshop, do you? We certainly do. It's going to focus on how to make food part of a healthy lifestyle. And it'll show that even sweet things like cakes can contain much less sugar than they usually do. That might be worth going to. We're trying to encourage our children to cook. Another workshop is just for children, and that's on creating posters to reflect the history of the town. The aim is to make children aware of how both the town and people's lives have changed over the centuries. The results will be exhibited in the community centre. Then the other workshop is in toy making, and that's for adults only. Oh, why's that? Because it involves carpentry. Participants will be making toys out of wood, so there'll be a lot of sharp chisels and other tools around. It makes sense to keep children away from it. Exactly. Now, let me tell you about some of the outdoor activities. There'll be supervised wild swimming. Wild swimming? What's that? It just means swimming in natural waters, rather than a swimming pool. Oh, okay. In a lake, for instance. Yes, there's a beautiful one just outside the town, and that'll be the venue for the swimming. There'll be lifeguards on duty, so it's suitable for all ages. And finally, there'll be a walk in some nearby woods every day. The leader is an expert on insects. He'll show some that live in the woods and how important they are for the environment. So there are going to be all sorts of different things to do during the festival. There certainly are. If you'd like to read about how the preparations for the festival are going, the festival organizer is keeping a blog. Just search online for the festival website and you'll find it. Well, thank you very much for all the information. You're welcome. Goodbye. Goodbye. That is the end of part 1.
You now have 1 minute to check. यस, अब स्कोर बताना है आपको, ये आपका लेवल चेक हो रहा है कि आप कहाँ खड़े हुए अभी। जरा देखते हैं, आज आपका पहला जवाब है EUSTATIS, उसके बाद रिव्यू, डांस, चैट, हेल्दी, पोस्टर्स, वुड, लेक, इंसेक्ट्स, ब्लॉग। 10 में से क्या स्कोर आया? 9। के बाद अपना स्कोर लाजमी शेयर करें, इससे मुझे आपके लेवल का अंदाजा होता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। चैट वो तक देखिए, कभी कभार इतना आसान वर्ड्स बोलता है। 8, वेरी गुड। आईफोन अपना नाम मेंशन जरूर करें। अस्मा, वेरी गुड। 6। किसी के अगर 2 और 3 आए ना बेटा, तो वो रिवर्स लगा ले, अभी उसको आइल्स की तैयारी की करने की जरूरत नहीं है। 1, 2 और 3 वाले मैं उनको अलाउ नहीं करता कि वो आगे जाए। आप 5, 6, 7, 6 पर 6 जो ना ये स्टार्ट होता है, 5, 6 ये स्टार्टिंग पार्ट 1 में 5, 6 आ रहे हैं, गाड़ी चल जाएगी, 9 तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, आप 30 क्रॉस कर लेंगे, टोटल आपके 40 मार्क्स होते हैं। अगर आपने 6 लिए तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका फर्स्ट स्कोर है। ठीक है, याद रख लें, अपने पास नोट कर लें कि मैंने बुक 15 का टेस्ट 2 पार्ट 1 किया, पहला स्कोर 6 आया। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं इस टेस्ट को थोड़ा सा समझा देता हूं, शायद आपको समझने के बाद आप देखें शायद स्कोर बेहतर आ जाए। कहते हैं गो टू डैश, कहीं पर आपको जाना है। मैनेजमेंट ऑफ, अच्छा अब देखो ये जो प्रेपोजिशन है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तुम्हें प्रेपोजिशन सुनने को मिलेगा। अटेंशन टू, नीड अ मिनिमम, मिनिमम की जगह पर एटलीस्ट का वर्ड इस्तेमाल होता है। ऊपर देखो 6 पे जाओ, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड डैश। देखो वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड डैश ये क्वालिटी लिख रहा है, तो वेरी ऑर्गेनाइज्ड उसके बाद भी कोई एडजेक्टिव ही आने वाला है। फिर कहते हैं यूज टू वर्किंग इन अ, वर्किंग इन अ क्या, वर्किंग इन अ होम, वर्किंग इन अ स्कूल, वर्किंग इन अ क्या, एबल टू कोप विद आइटम्स दैट आर डैश, ड्राइविंग लंदन और डैश सर्विस, वेयर हाउस कौन सी सर्विस। ठीक है, और ऊपर देखो आपको लिखना है कंपनी दैट प्रोड्यूसेस डैश, दैट प्रोड्यूसेस व्हाट। मैन्युफैक्चर्स और प्रोड्यूस दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, कभी भी डैश से पहले वाला जो वर्ड है ना वो नहीं मिलता, उसका सिनोनिम आएगा। देखो प्रोड्यूसेस की जगह पर मैन्युफैक्चर्स आ सकता है, मैनेजिंग की जगह ऑर्गेनाइजिंग आ सकता है। मैनेजमेंट ऑफ का वर्ड आपको मिलेगा, अटेंशन टू मिल सकता है, मिनिमम ऑफ, मिनिमम की जगह एटलीस्ट। अगर ये चीजें जहन में होती है तो फिर देखो तुम सुनते हुए कैसे क्लिक करोगे। आप 6 वाले 7 पे जाने वाले। चलो स्टार्ट। Recordings, and you will have to answer question. My name's Sally. Good morning. Thanks for coming in to see us here at the agency, Joe. I'm one of the agency representatives, and my name's Sally Baker. Hi, Sally. I think we spoke on the phone, didn't we? That's right, we did. So thank you for sending in your CV. We've had quite a careful look at it, and I think we have 2 jobs that might be suitable for you. Okay. The first one is in a company based in North London. They're looking for an administrative assistant. Okay. What sort of company is it? They're called Home Solutions, and they design and make furniture. Oh, I don't know much about that, but it sounds interesting. Yes, well, as I said, they want someone in their office, and looking at your past experience, it does look as if you fit quite a few of the requirements. So on your CV, it appears you've done some data entry. Yes. So that's one skill they want. Then they expect the person they appoint to attend meetings and take notes there. Okay. I've done that before, yes. And you need to be able to cope with general admin. Filing and keeping records and so on. But that should be okay. And in my last job, I also had to manage the diary. Excellent. That's something they want here too. I'd suggest you add it to your CV. I don't think you mentioned that, did you? No. So as far as the requirements go, they want good computer skills, of course, and they particularly mention spreadsheets.
That should be fine. And interpersonal skills, which would be something they'd check with your references. I think that should be okay, yes. And then they mentioned that they want someone who is careful and takes care with details. Just looking at your CV, I'd say you're probably all right there. I think so, yes. Do they want any special experience? I think they wanted some experience of teleconferencing. Oh, I've got 3 years experience of that. Let's see. Yes, good. In fact, they're only asking for at least 1 year, so that's great. So is that something that might interest you? It is, yes. The only thing is, you said they were in North London, so it would be quite a long commute for me. Okay. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. So the second position might suit you better as far as the location goes. That's for a warehouse assistant, and that's in South London. Yes, that would be a lot closer. And you've worked in a warehouse before, haven't you? Yes. So as far as the responsibilities for this position go, they want someone who could manage the stock, obviously, and also deliveries. That should be okay. You've got to keep track of stuff, but I've always been quite good with numbers. Good. That's their first requirement. And they want someone who's computer literate, which we know you are. Sure. And then they mention organizational skills. They want someone who's well organized. Yes, I think I am. And tidy? Yes, they go together really, don't they? Sure. Then the usual stuff. They want someone who can communicate well, both orally and in writing. Okay. And for the last warehouse job I had, one of the things I enjoyed most was being part of a team. I found that was really essential for the job. Excellent. Yes, they do mention that they want someone who's used to that, yes. Now, when you were working in a warehouse last time, what sorts of items were you dealing with? It was mostly bathroom and kitchen equipment, sinks and stoves and fridges. So you're okay moving heavy things? Sure, I'm quite strong and I've had the training. Good. Now, as far as experience goes, they mention they want someone with a license and that you have experience of driving in London, so you can cope with the traffic and so on. Yes, no problem. And you've got experience of warehouse work. And the final thing they mention is customer service. I think looking at your CV, you're okay there. Right. So what about pay? Can you tell me a bit more about that, please? That is the end of part 1. You now have 1 minute. चले भाई, अब आपका जो स्कोर है ना वो है असल स्कोर, और इसको आपको इम्प्रूव करना है अब डे टू डे. यस, स्कोर चेक करें. फर्नीचर, मीटिंग्स, डायरी, डायरी की स्पेलिंग DIARY, डिटेल्स 1 ईयर, डिलीवरीज की स्पेलिंग चेक करें. टाइडी, टीम, हैवी, कस्टमर, कस्टमर की स्पेलिंग देखें. इसमें 3 स्पेलिंग ऐसी जो आप गलत लिखी होगी आपने. डायरी, डिलीवरीज, कस्टमर. मान ले मेरी बात और आपके नंबर कट गए. कौन मेरी बात से एग्री करता है? जी सर, मेरी जो गलती हुई है ये स्पेलिंग की वजह से हुई है. आसान वर्ड से स्पेलिंग नहीं आती. स्कोर सेंड करें बेटा अपना. Score please. 8, 7,
8 6 वाले, अच्छा दोनों स्कोर साथ लिखिए, पहले इससे पहले वाले टेस्ट में क्या थे और अब क्या हुआ है। ठीक है, 9 और 8 8 8 ठीक है, 6 और 9 माशाल्लाह, 6 से 9 पर आ गई, जबरदस्त। और कोई 6 वाला कहाँ पहुंचा, 6 पर ही रुका हुआ है, 6 से 7 हो गया, 6 वाले 7 पर आए। वेरी गुड, चलिए असाइनमेंट आप, वेरी गुड, 6 to 7, जबरदस्त, 6 से 7 पर आ गए। असाइनमेंट नोट करें अपना, आज से आपको बुक 11 स्टार्ट करनी है, ठीक है। आपके पास लिंक्स भी आ रहे हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आपके पास बुक 11 ऑलरेडी मौजूद है। मैं आपको लिसनिंग की बुक भी भेज देता हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए, आप उससे भी वो अपने सामने रखें, आप पीडीएफ उसको खोल लें, ऑडियो प्ले कर दें। आप हेडफोन लगाकर, लाजमी है हेडफोन जरूर लगाए, अच्छे वाली क्वालिटी के, या फिर अपना एक अच्छा हैंड्स फ्री ले लें, वो दोनों कानों में लगाकर फिर आप सुने, फिर देखिए आपका क्या स्कोर आ रहा है। मैं इंशाल्लाह आपको एक जो है ना वो भेजूंगा, चेक लिस्ट, बुक 11 to 17, कि जब आप उसको सॉल्व करें फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो आपको स्कोर लिखने की जगह उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, एक पेज का, एक पेज पे आ जाएगा वो, ठीक है। आई विल फॉरवर्ड यू इंशाल्लाह विद इन 2 hours। तो उसके बाद फिर आप अपनी जब प्रैक्टिस शुरू करें तो उस चेकलिस्ट को जरूर फिलअप करें कि मैंने बुक 11 to 17 प्रैक्टिस किया और मेरा ये स्कोर आया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। आज का जो स्कोर आया वो अपने पास नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी बुक दोबारा फौरन रिपीट नहीं करनी है। अब आपने ये कर लिया, अब आप जाएंगे 15 के बाद, अब आप 11 से शुरू करेंगे, 11 करेंगे, 12 करेंगे, कल मेरे साथ 16 करेंगे आप लोग, ठीक है। 11 12 13 14 15 आपकी अभी हो गई है, 16 कल हो जाएगी, और फिर 17। तो आपको अभी कितनी बुक्स के असाइनमेंट मिल गए, 11 12 13 14, ठीक है। 4 बुक्स के असाइनमेंट है, आप बहुत आसानी से 2 घंटे में कर सकते हैं। अब चाहे तो कल मुझे गुड न्यूज दीजिएगा, सर मैंने चारों कर ली, और मेरा ये चारों, मैंने 4 बुक्स किए सर, 4 बुक्स में मैंने 16 टेस्ट किए सर, मेरा 16 टेस्ट का रिजल्ट ये रहा। फिर आप देखिए, और फिर आप सेक्शन 2 पे चले जाएंगे, फिर आप सेक्शन 3, फिर सेक्शन 4, उसके बाद आप दोबारा से आप राउंड रिपीट कर सकते हैं बुक 11 से, पार्ट 1 पार्ट 2 आप भूल चुके होंगे जब तक जवाब आता, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज चेक योर व्हाट्सएप, आपके व्हाट्सएप के ऊपर असाइनमेंट में फॉरवर्ड कर रहा हूँ।